Hello there, everybody. Welcome back to the channel. Today we're going to be watching a very serious video that affects YouTube and a very, very large YouTuber as well. Mohawk Mongol here. Am I saying his name right? Someone let me know in the comments down below. I'm bad with English names. So when it comes to Indian names as well, I flub them so hard. But aside from that, a very, very, very serious situation here happening. The video title is simply Dear A&I. So what happened? Well, A&I decided to copyright strike one of Mohawk Mongol's videos, where he used a small snippet in a creative fashion. For those that are unaware, according to YouTube guidelines, videos can be repurposed and reused as long as they fall under fair use. And, fair use is simply as simple as, adding additional commentary to the video could be considered fair use. And now I know what he did in his video was a lot more transformative than that. Uh, and they still went after him. And unfortunately, YouTube, went through with the strike. So what happens with YouTube is the person strikes the channel. The person being striked has an option to counter, to appeal that strike. But if the person on the other end doesn't take it off, then things could lead to like court battles and stuff like that. So yeah, very, very serious situation. They copyright struck him, and I believe they were asking for money to remove the copyright strike as well. We'll learn a little bit more in this video, but I don't know. YouTube, there's something seriously wrong with YouTube right now. It feels like, I don't know. Feels like you know what? I'm on YouTube. Well, YouTube, there's some situations on YouTube. If you don't know, I mean, you can look at my channel, look at my community posts at the time of recording this. Yeah. Anyways, let's watch the video. The link to this video will be in the description down below. So always make sure to go and check out everyone's descriptions. I did not mean to open that up. I meant to close the description. But yeah, a lot of bigger YouTubers coming out in support of Mohawk here. So Mohawk, not Mohawk, Mohawk. I'm really bad with names. Anyways, let's watch the video. Yeah. 1992 में पापा का एक स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस था। उसी साल हर्षद मेहता का स्कैम हुआ और ओवरनाइट पूरा बिजनेस बंद हो गया। कुछ लोगों से पापा को पैसे लेने थे और कुछ लोगों को देने थे। जिनको देने थे उनका तो फोन आए जा रहा है और जिनसे लेने थे वो फोन पिकअप नहीं कर रहे। सर्दी का समय था, मेरी बहन 1-1.5 साल की थी, तो पापा ने मम्मी को बोला कि इसको लेकर चलते हैं, उनके घर जाते हैं, शायद दया खा ले और पैसा वापस कर दे। ये हालत थी उस समय। उसी साल में पैदा हुआ। अब ये पूरी राम कथा मैं आपको भला क्यों बता रहा हूँ? इसलिए क्योंकि अगले 30 साल मेरे पेरेंट्स ने मेहनत करी ताकि मुझे ना किसी के सामने गिर गिड़ाना ना पड़े। They walked so that I can run. I am not asking what's the time duration you have used. 5 minutes, 10 minutes, 10 seconds. You use strike footage without my permission. I put a claim on YouTube. They have put a strike, copyright strike. ANI ने मुझ पर प्रेशर डाला कि अगर मैंने 50 लाख रुपए 50 lakhs. That is a lot of money. That is a lot of money. नहीं दिए तो मेरा चैनल डिलीटेड रहेगा। I'll just be okay. करना है करो सर, आपका चैनल जा रहा है जा रहा। पर अब तांडव होगा। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा जो ANI ने मुझे बोली और ईमेल्स दिखाऊंगा जो उन्होंने भेजे। तो अब स्टार्ट करते हैं। So he's breaking down he's bringing the receipts. He's breaking down the entire chain of events here, huh? Oh yeah, phone calls and everything. 20 मई को मुझे पहली कॉपीराइट स्ट्राइक मिली। You received one copyright strike. If you're wondering why you got a strike, you can learn more about copyright strikes. Dang YouTube. थी अपने कोलकाता रेप केस के वीडियो के लिए। ये वीडियो मैंने कई महीने पहले बनाया था। कॉपीराइट स्ट्राइक किसने भेजी? ANI ने। क्यों? क्योंकि मैंने 16 मिनट के वीडियो में उनकी 11 सेकंड 11 seconds of footage. They copyright struck him for 11 seconds of footage. That's wild. फुटेज यूज करी। मेरे टीम मेंबर्स ने बताया कि What is it here?
And look, here's the content used. Women on streets in West Bengal. It just says women on streets and WB to reclaim the 16 something. मिनट के वीडियो में उनकी 11 सेकंड फुटेज यूज करी। मेरे टीम मेंबर्स ने बताया कि दूसरे क्रिएटर्स को भी कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ रही हैं, पर ऑनेस्टली मैंने इसके Yeah, बारे I've been told not to use ANI. I gotta make sure to steer clear of ANI whenever I talk about news or any recent events. I even recently was watching the Shushi the Roar interview, and he had ANI microphone, and like there's like a little ANI plaque at the top, even though it was like on Hindustan Times. So what I did was in the YouTube editor itself, I went in and blurred those out, even though it was, you know, a Hindustan Times video. I made sure to those were blurred out. में इतना सोचा नहीं, क्योंकि मुझे लगा ये तो फेयर यूज के अंडर आना चाहिए। It should be fair यूज use. बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है कि अगर आपको कमेंट्री करनी है ना, तो 30 या 20 मिनट के वीडियो के लिए कुछ सेकंड आपने किसी के ले लिए तो वो अलाउड होता है। और मुझे ये भी था कि वर्स्ट केस कॉपीराइट स्ट्राइक है, हम अपील करेंगे, हो जाएगा सॉल्व। मुझे कई कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई हैं, जैसे इस वीडियो में आईसीसी ने भेजी थी। अब What is this? हो जाएगा सॉल्व। मुझे कई कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई हैं, जैसे इस He's got many copyright strikes. ICC Men's Cricket World Cup. They claimed the whole video. They claimed the whole video. That's crazy. That's wild. Wow. इस वीडियो में आईसीसी ने भेजी थी। अब ऐसे केसेस में ना कई बार वीडियो डिलीट हो जाता है, या फिर कई बार वो डीमोनेटाइज हो जाता है, यानी कि आप उससे पैसे नहीं कमा सकते। पर ये प्रॉब्लम एएनआई ने इधर रोकी नहीं। कुछ ही दिन बाद मुझे एक और कॉपीराइट स्ट्राइक आई। मेरे They copyright struck his Operation Sindor video. You know, that's the time where, you know, where people should come together in India as one. They just try to strike down another person, you know, giving out details, explaining it to people so there's better understanding around the world, and they decide to strike it ऑपरेशन for, again, look, for not even that long, 9 seconds, and they gave his entire channel a copyright क्योंकि strike. मैंने 38 मिनट के वीडियो में उनकी 9 सेकंड की फुटेज यूज करी थी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की। यूट्यूब के हिसाब से अगर आपको 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स मिल जाती हैं, तो Holy आपका चैनल crap. डिलीट हो जाता है इमीडिएटली। तो बस एक स्ट्राइक में दूर था ये चीज होने से। उसी समय मुझे एक आर्टिकल के बारे में पता चला जहां ये लिखा हुआ है कि एएनआई The news agency is using a chink in YouTube's copyright policy in India to shut down news content producers if they don't cough up large sums for using its videos and visuals. What is the name of this article here? आर्टिकल ANI finds business niche. Okay, I did the same thing down here. So they're going after Indian content creators for utilizing news footage. You know, the footage that should be free for everyone to look at. के बारे में पता चला That's जहां ये लिखा हुआ है कि crazy. एएनआई ये चीज कई और यूट्यूबर्स के साथ कर रहा है और That's उनसे 15-20 crazy. लाख रुपए मांग रहा है। Wow. ये स्ट्राइक्स हटवाने This is I mean, one would attribute this almost close to like extortion or something. That's crazy. That's wild, dude. इनफैक्ट मेरे चीफ ऑफ स्टाफ ने क्रिएटर से बात भी करी जिनको 3 से ज्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक्स मिल गई थी और उनका चैनल डिलीट हो गया था। उन्होंने एएनआई से बात करी और एएनआई ने कहा कि हमें 22 लाख प्लस जीएसटी दो और हम आपका ये सारा चीज सॉल्व कर देंगे। नेगोशिएशन करी उस क्रिएटर ने और इवेंचुअली 18 लाख प्लस जीएसटी दी। किस लिए? क्योंकि कुछ सेकंड की फुटेज उन्होंने यूज करी थी। इस क्रिएटर ने फिर मुझे एएनआई एम्प्लॉय का नंबर दिया जो इन सारी चीजों को हैंडल कर रहा है। 2 दिन पहले मेरे टीम मेंबर ने इस आदमी को कॉल किया और बोला कि भाई हमें कॉपीराइट मिल गई है, कैसे सॉल्व करें। इमीडिएटली उसने एक ईमेल दिया और कहा कि इस पर ईमेल करो, इस पर हमारा एक रिस्पॉन्स आएगा तुम्हें। मेरे टीम मेंबर ने ईमेल भेजा और फिर रिप्लाई आया। ईमेल में पता है क्या लिखा था? Oh, 45 लाख प्लस जीएसटी दो और चैनल की सारी स्ट्राइक्स हम हटा देंगे, नहीं दोगे तो चैनल डिलीट हो जाएगा। एएनआई ने ये नहीं बोला how is this not
This is akin to somebody like going up to someone's business and smashing in a couple windows and saying, "Oh, we won't smash your other windows as long as you give us, all the money that you've earned that day." It's basically the same thing. कि हमें उन वीडियोस का रेवेन्यू चाहिए। उन्होंने कहा कि हम तो चैनल डिलीट करवा देंगे अगर आपने ये पैसे नहीं दिए। अब मुझे बताओ, क्या ये हफ्ता वसूली की तरह नहीं है? उन्होंने कहा कि ये 45 लाख प्लस जीएसटी ना पेनल्टी का अमाउंट है और एनुअल सब्सक्रिप्शन है एएनआई के लिए। एएनआई बेसिकली एक न्यूज एजेंसी सर्विस है जो वीडियोस शूट करती है और कई न्यूज चैनल्स को बेचती है। तो उनका कहना है कि 45 What were जो the news वीडियोस शूट channels here? करती है और कई न्यूज चैनल्स को बेचती है। तो उनका कहना है कि 45 लाख प्लस जीएसटी दो, आपकी पेनल्टीज भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगी और आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा एएनआई की फुटेज का। ये क्या घटिया तरीका है अपना रेवेन्यू बढ़ाने का कि कॉपीराइट स्ट्राइक दो और फिर बोलो कि 50 लाख रुपए दो और आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। फिर मेरे टीम में So they're basically they're forcing these people to buy like licensing rights. Huh. मेंबर ने उस एएनआई एम्प्लॉय को कॉल किया। वो बोलता कि आपको कितनी कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई है? हमने बोला 2। उसने कहा अच्छा बस 2, अभी आपको 6 और आएंगी। हमने टोटल 8 भरी है। उसने कहा कि भाई 15 मिनट हो गए, इससे ज्यादा तो टाइम मैं किसी को नहीं देता, कल बात करेंगे, तू सोच ले जितना सोचना है। पता है क्या है, ये बंदा और ये एएनआई की टीम बहुत ही चंट है। इनको पता है कि अभी बस 2 स्ट्राइक्स आई हैं तो मैं इतना डेस्परेट नहीं हूँ। एक बार 3 स्ट्राइक आ जाएंगी ना और चैनल डिलीट हो जाएगा, तब ये डेस्परेट होगा। इसलिए वो चाहते हैं कि डे बाय डे नेगोशिएशन एक्सटेंड होती रहे। एक बार चैनल डिलीट हो गया तो मैं जो भी नंबर बोलूंगा वो मान जाएंगे। पर बेचारे को पता नहीं वो किससे बात कर रहा है। यूएस की एक पॉलिसी है दैट दे डोंट नेगोशिएट विद किडनैपर्स, एटलीस्ट ऑफिशियली ये पॉलिसी है एंड आई फील दैट इज माय पॉलिसी आल्सो। मैं It's a good एएनआई के साथ policy. नेगोशिएशन It's a करनी good. नहीं है। It's a very good डिलीट करना है ना policy. चैनल, कर दो। शाम को ही मेरी टीम मेंबर ने उस एएनआई एम्प्लॉय को कॉल किया। बॉस आप एक काम This is a recreation, by the way. So I'm assuming they used what, like AI to recreate the voice here. करो ना, then we can do one thing. What are the recording laws for in India? Or because I mean, here in the U.S., like some states, you're allowed to record without saying that you're recording. Other states, you have to get permission to record. Other states, you just simply have to state that you're recording. But it varies. Instead of 1 year, make it for 2 year for this price. 2 years for what, 40? 45 paid 2 years. Even then, that does not make sense. No, like think Now about I it. have suddenly given you 50%, right? क्या डील है भाई? What- 50% what- डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं तुम्हें। मैंने अजीज को बोला कि मैं उनको चवन्नी भी नहीं दूंगा, पर तू उनसे बात कर। Point being, we will never be able to recover that money. That is like if it is a fair amount, like I said, if we are to pay 1 lakh per month, that is something we can recover somehow. 30 is a number that we cannot recover. We will never be able to make that money, that investment back. एंड में फिर बोलता कि थोड़ी देर रुको, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। क्या बोलूं मैं? Just hold on. Yeah. Ajish, can I This just feels so gross, so scummy. call you? 2 minutes. Yeah, sure. हाँ, I'll call you. कॉल करके बोलता है कि छोड़, अब 40 लाख 2 years बेस्ट डील। We have given the discount. If we go for the 2 years, I'll make it in the 45. Okay, 40 for 2 years. If you are agree, okay. If you want to go for the 1 year, I'll make it 30 plus GST. अजीज ने फिर ब्रेकडाउन मांगा कि ये 40 तक आया कहाँ से, बताओ ब्रेकडाउन। तो ये बंदा बोलता कि 8 कॉपीराइट स्ट्राइक्स दिए हैं, हर स्ट्राइक की पेनल्टी लगती है 5 लाख, तो 40 लाख हो गए। तो या तो 40 लाख पेनल्टी के दे दो या फिर 40 लाख का सब्सक्रिप्शन ही ले लो 2 साल का। I wanted to understand what was the breakdown of that 40. YouTube needs to do something about this. This should not be allowed. But it's so difficult, I would say, because YouTube is based out of the U.S. It's a USA company, and this is an Indian company, and the laws are somewhat slightly different between USA and India. And like, what could they do? Ban ANI? Is that the extent of what they could do? YouTube could just ban ANI up front outright. But would they do that? I don't know. I mean, it does allegedly feel like extortion to an extent.
YouTube. Hopefully, YouTube sees this. YouTube needs to step in. Wow. 5 lakh. See, if I'll give you the complete breakdown, then I'm And not they've going been doing to this फिर for negotiate. to how many I people? told So you many now, 4 people. 5 lakhs per month is charges for the subscription. Penalty is different. We have tried some 7 8 videos. If you consider that one, then 8 5 ja 40 is the penalty, and subscription is different. Now tell me that. और ये इनका बिजनेस मॉडल है, स्ट्राइक डालो, चैनल डिलीट कराओ और फिर वसूली करके एनुअल सब्सक्रिप्शन बेचो। बताओ, ये हाल है हमारे देश का कि बिजनेसेस सोच रहे हैं कि पैसा कैसे ऐंठा जाए दूसरे लोगों से। ये नहीं कि हम क्रिएटिव चीजें करें, प्रॉब्लम सॉल्व करें, अच्छा तरीका अपना रेवेन्यू कमाने के लिए। नहीं नहीं, किसी को किडनैप कर लेते हैं, हॉस्टेज बनाकर फिर वसूली करेंगे। और भाई उसकी बातों में ना कोई That's लॉजिक what नहीं, it is. कोई भी लॉजिक नहीं है। मेरे टीम मेंबर ने कहा कि टी सीरीज का अगर आप गाना यूज करते हो तो टी सीरीज बस उस वीडियो का रेवेन्यू ले लेता है। ये नहीं कि हमारा सब्सक्रिप्शन लो आप 1 करोड़ का, ऐसा नहीं चलता। ये एना वाला बंदा बोलता कि हमारा बिजनेस मॉडल अलग है, हम वो फॉलो नहीं करते। We are a different model. We don't claim the revenue. We put the strike. If you ask the penalty, you are ready to pay the penalty. Okay. You want to take a subscription, then we can consider the waive off on penalties. और पता है एंड में क्या बोलता है वो बंदा कि मुझे मोहक का चैनल पसंद है इसलिए इतनी बात कर ली। नहीं, और पता है एंड में क्या बोलता है वो बंदा कि मुझे मोहक का चैनल पसंद है इसलिए इतनी बात कर ली, नहीं तो मैं इतना अटेंशन भी नहीं देता किसी को। यार रजीश, जो मैं कर सकता था बेस्ट आई हैव गिवन दैट, बस आई हैव गिवन लॉट ऑफ डिस्काउंट। यार इतना तो मैं किसी से बात भी नहीं करता था He's बॉस। what's worse is he's making it sound like it's a good deal, like he's his buddy. He's doing this to help them. That's what it sounds like he's doing. It's a manipulative tactic. It's a psychological manipulative tactic there. But I'm considering चलो यार, because I love your channel. Basically, that's why I'm talking to you. हाँ भाई, ए, बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। 45 लाख की डील मांगी थी 1 साल के लिए, अब 40 लाख की करती 2 साल के लिए। तू है कौन भाई? तू उसी एम्प्लॉय की तरह जो कोलकाता में ना जो स्कैम कॉल सेंटर्स हैं, वो कॉल करते हैं और बड़े चौड़े बन जाते हैं एक बार, उसी की तरह है तू। हु आर यू टू थ्रेटन मी? तो लास्ट डील ऑफर करता है कि 1 साल का चाहिए तो 30 लाख रुपए दो और 2 साल का चाहिए तो 40 लाख रुपए दो। और लास्ट में वो बताता है एक बहुत बड़े क्रिएटर के बारे में जिसने ANI को अभी रिसेंटली 50 लाख रुपए दिए, पिछले हफ्ते उसने हमें नाम बताया। And they paid 50 lakh for 1 year only. 50 lakh plus GST. They paid that. 50 लाख रुपए दिए ये पूरा मामला सॉर्ट करने के लिए। यू नो द क्रेजी थिंग कि ANI ने ये सेम चीज कई क्रिएटर्स के साथ करी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजी। बेसिकली इमेजिन कि आप अपने बिजनेस में इतने घटिया हो कि आपको हफ्ता वसूली करनी पड़ेगी। और यार मेरी तो कोई पर्सनल That's what it is. ना मैंने उनके खिलाफ कोई वीडियो बनाया ना कोई कंटेंट बनाया। यू कैन डिलीट माय चैनल, यू कैन बैन मी ऑन यूट्यूब, यू कैन टेक अवे माय टाइटल्स, एवरीथिंग। आई नो कि मैं इतना स्मार्ट और हार्ड वर्किंग हूँ दैट आई विल बी सक्सेसफुल नो मैटर व्हाट। एंड यू नो व्हाट, ये हमारी गवर्नमेंट को पता होना चाहिए इसके बारे में, विच इज व्हाई आई रोट एन ईमेल टू द PMO एंड टू INB मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव। पता होना चाहिए सरकार को कि चल क्या रहा है उनकी दुनिया में। दिस इज द एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट ऑफ द ईमेल आई सेंट। He actually linked this down here as well. I wanted to look at it, but he posted it here, so this is good. अब मैंने अपना पार्ट कर लिया, मैंने सारे Okay. I want to read this email. दिस इज द एग्जैक्ट I want to read the email. All right. Dear Honorable Prime Minister Modi, on the 7th of May, 2025, the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor against a terrorist attack on innocent Indians. As you know, war isn't fought only on the front lines, but also in the narrative. Very true. I am not as brave as our armed forces, but I wanted to play a small part in making sure that India's message reaches the world so that we never have to suffer from terrorism again. I made a video in support of the military operation. It received 2 million views. However, the video got a copyright strike. ANI, the news agency, put a copyright strike for using 9 seconds of their footage in 33 minutes video. The video was immediately deleted. This is not the worst part. The worst part is that they're using it as a threat to extort money from me. They have asked for 45 lakh to restore my channel. I have linked the emails and the call records between me and ANI employee in this Google Drive folder. In March 2024, you hosted India's biggest creators. You said that India's creators are digital ambassadors of India, representing it on the global stage. And that let's share the story of India to the world. However, this movement will not grow if creators are threatened and extorted for money.
I am not emailing you for myself. The agency has threatened several other creators. I am writing because this action violates creative expression and sets a wrong precedent. Your intervention would dissuade other organizations and will ensure that India's creator economy doesn't encounter any stumbling blocks. Best, Mahawk. एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट ऑफ द Wow. ईमेल आई सेंड। अब मैंने अपना पार्ट कर लिया, मैंने सारे फैक्ट्स हमारे मिनिस्टर्स को बता दिए। अब उनके ऊपर है, इट्स नॉट इन माय कंट्रोल कि वो कौन सा डिसीजन लेते हैं। हो सकता है कि वो एएनआई को फेवर करें। इफ दैट्स ट्रू देन सबके सामने आ जाएगा ना कि हमारे देश में चल क्या रहा है, दैट दिस हफ्ता वसूली इज कम्प्लीटली ओके। बिहार में गुंडा राज होता था, सबको पता था कि रात में अगर गाड़ी लेकर गुजरोगे Hold on. ओके, बिहार में गुंडा Okay. Okay. All right. I was like, I didn't read that in time. All right. In Bihar, there was a goon rule. Okay. राज होता था, सबको पता था कि रात में अगर गाड़ी लेकर गुजरोगे तो गाड़ी की चोरी होगी। तो ये हफ्ता वसूली भी सबके सामने आ जाएगी कि अगर क्रिएटर बनना है और आपने ऑपरेशन सिंदूर पर वीडियो बनाया, 8 सेकंड की फुटेज ली, 30 मिनट के वीडियो के लिए, तो 50 लाख देने पड़ेंगे। ये फिर छुप कर नहीं होगा ना। अब मैं यूजुअली ऐसा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने की इतनी मांग नहीं। And you know what's the crazy thing? You know what the crazy thing is? It's like it's the news. It's a news agency. They don't own that footage either. Like, where do they get the news footage? नहीं करता हूँ और बहुत टाइम हो गया, बट फॉर दिस वीडियो आई नीड योर हेल्प। फर्स्ट, शेयर दिस वीडियो। आई वांट दिस मैसेज टू स्प्रेड टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, बट अवॉइड एनी पर्सनल अटैक्स। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है उन एम्प्लॉयज के साथ। यू शुड अवॉइड एनी पर्सनल अटैक्स। True. इफ दे आर लो, Any situation like this, always avoid personal attacks. He's 100% correct. remain high. Second, target ANI where it hurts the most. तो कोई भी प्लेटफॉर्म में फॉलो कर रहे हो, प्लीज अनसब्सक्राइब एंड ब्लॉक देम। थर्ड, अगर I'll आप एक do that creator right हो, now. अगर आपकी I'll do that right now. I do believe I am following them on Twitter, so I will do that right now. Let's go ahead and pull it up. Yep. Bam. Goodbye. Narendra Modi is following them, and so is Sidhant Sybil. Those two are still both following them. Unfortunately, Narendra Modi follows ANI. Come on, Narendra Modi. Vizgard follows ANI Digital. Not good. Vizgard or Vizgrad. Not good. Anyways. Wait, what was that? Let me. Oh. It's just people sharing a story on Twitter as well. Good. Very good. अगर जिंदगी में कुछ भी मैंने पॉजिटिव लाया हो चेंज, तो प्लीज शेयर दिस मैसेज। स्पेशली वो लोग जो एएनआई के पॉडकास्ट में आए, जैसे प्रखर हो गए या फिर कुशल हो गए, क्योंकि यार एम्बैरेसमेंट सबसे ज्यादा तब होती है जब आपके आसपास वाले लोग भी बोलते कि भाई तू क्या कर रहा है। सो इफ दीज पीपल क्रिटिसाइज एएनआई, मे बी दे विल थिंक कि आई नीड टू चेंज माई बिहेवियर। फाइनली, इफ यू आर अ क्रिएटर जिसको कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है एएनआई के साथ, और ऐसे ही एएनआई ने आपके साथ बिहेव किया है, तो रिकॉर्ड ऑल द एविडेंस। ठीक है, ईमेल्स हो गए, कॉल कॉन्वर्सेशंस हो गई, जो भी डिटेल्स आपके पास है, ईमेल में कौन कौन सीसी था, किससे ईमेल आया, उन्होंने क्या क्या बोला, सबका एविडेंस बनाओ। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ना ईमेल एड्रेसेस हैं आईएनबी मिनिस्टर के और उनके रेलेवेंट ऑफिशियल के, उनको भेजो। देखो, अगर हम सभी लोग ना एविडेंस के साथ ईमेल करेंगे ना मिनिस्ट्री को, तो मिनिस्टर तक बात तो पहुंच जाएगी। सो आई वुड से कलेक्ट ऑल दिस एविडेंस एंड शेयर। एएनआई को लगा कि कई क्रिएटर्स को धमकी मिली है। मैं खुद कई क्रिएटर्स को जानता हूँ जिन्होंने 12, 15, 18 लाख दे दिए। एक क्रिएटर को, जैसे मैंने कहा, बड़े क्रिएटर ने 50 लाख रुपए दिए। तो आप इमेजिन करो एएनआई ने कितने पैसे कमाए होंगे। एएनआई को लगा कि मैं भीख Tons of मांगूंगा, money. मैं नहीं मांगूंगा कुछ। Tons. Who knows how much money they've earned from copyright striking these channels and then forcing them to give them money to, remove the copyright strikes. That's प्लीज कलेक्ट करी ना अपनी जिंदगी में। वो मैंने दीवार पर लटकाने के लिए कलेक्ट नहीं करी है, बल्कि इसके लिए करी है ताकि ऐसे लोगों का जब सामना हो जिंदगी में, उनसे मैं निपट सकूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये चैनल डिलीट हो जाए, टेंशन मत लो, एक नया चैनल बनेगा और मैं उतना ही सक्सेसफुल हूँ। man.
Man. All right. Here's this is right here. There's going to be a lot of shame A and I in the comments. There's going to be a stand of solidarity in the comments. Uh, I have actually already posted solidarity in the comments when the video first came out. Um, I went on and I posted it. I hadn't watched the entirety of the video. I watched the first few minutes and then I'd put it off. Ban A and I. I also got a strike from them on 2 videos for just 9-second clip. Who is this? Who is this? They also got a ban? That's crazy. That's crazy, dude. They're just out here. They're out here. They're out here copyright striking everybody, huh? A&I, this is clearly extortion. What is going on? More power to you. We stand with you. IIP, we stand with you. Daylight robbery. If copyright keep working like this, no content will be left on YouTube. You should just step forward because without creators, YouTube is nothing. Well, I mean, in U.S. fair, you know what? Let's pull it up. While international rules about copyright exceptions are often similar, they can differ. Different countries and regions may have different rules, but when it's okay to use copyright protected material without the copyright holder's permission. In the United States, works as commentary, criticism, research, teaching, or news reporting may be considered fair use. So what I do, which is typically a lot of commentary, right? I make sure that I talk a lot in my videos so I can attribute it as commentary. I'm not going to be those, shameless react channels that just sit there blank-faced and stare at the screen. I'm going to put in my commentary. I'm going to talk about things. I'm going to criticize things. I'm going to do research. So I make sure that, I go a step above when I do these quote-unquote reactions. All right, so commentary, criticism, research, teaching, and news reporting may be considered fair use. In the EU, more limited exceptions are recognized, and the use may fit into specific categories such as quotation, criticism, review, caricature, parody, and pastiche. I don't know what that means. Other country regions have a concept called fair dealings that may work differently. So it's different all over the world, unfortunately. It's very unfortunate. So we'd have to try to find out with the exact fair use clauses in India. In rare cases, we've asked YouTube creators to join an initiative that protects some examples of fair use on YouTube from copyright removal requests. Through this initiative, YouTube indemnifies creators whose fair use videos have been subject to removal requests for up to $1 million of legal costs in the event the removal results in a copyright infringement lawsuit. The goal of this initiative is to make sure that creators have a chance to protect their work. It also aims to improve the creative world by educating on both the importance and limits of fair use. Because of the variations in this rule governing such uses by differing countries' regions, as described above, we're only able to offer the initiative. Oh, they only offer this initiative in the United States. The living in the United States who agree to have their videos only available in the United States. Dang. Okay. I was like, oh, wait a minute. I was thinking there for a second. Wait a minute. There might be some case where YouTube will step in, but unfortunately not. I wonder, is there any way to find India specific? All right, I found this article here that talks a little bit about it. The report's collective May 19th investigation detailed how A&I is exploiting YouTube policy of dealing with copyright infringement claims to negotiate lucrative content syndication deals with news creators. The story asserted that A&I holds a negotiation imbalance while demanding high prices from news creators because YouTube first takes down videos and channels upon receiving claims based on a judgment call it makes on claims received and then informs the creators to defend their case if they with the claimant or in a court of law.
The story noted that while the copyright law in India does not allow usage of copyright material under certain circumstances, such as for news analysis, and in practice, the lack of specifics in Indian copyright regulations and YouTube policy on copyright claims is creating a loophole with ANI that ANI can exploit. So it does allow usage of copyright material under certain circumstances, such as news and analysis. In practice, yeah, news and analysis. Okay. YouTube statement. We are appending the YouTube rejoinder here with your response and providing a link to the blog page. YouTube statement. YouTube is not a court of law, and we do not adjudicate copyright ownership disputes or make legal determinations on the merit of fair use or other exceptions. Our role is to process copyright takedown notices that comply with applicable laws such as the DMCA or local equivalents, and provide a dispute pathway for uploaders who believe they have the rights to use this content. While we do not make final legal determinations about fair use, fair dealings, we do require that copyright claims make legal requirements under the applicable law, such as including whether the claimant has considered exceptions to copyright like fair use, fair dealings. Therefore, our review of a copyright takedown notice is to ensure it meets these legal and procedural requirements for such notices. It's incorrect to characterize this review of the notice itself as judgment call or legal determination of copyright ownership. These are matters for resolution between the parties involved or to be determined by a court of law. YouTube's copyright policy for creators hangs like a sword over their heads, leaving them vulnerable to potential coercion from claimants of copyrights. It's true. It's very true. So, it definitely feels like ANI is in the wrong. It's clear to say that. It's very clear to say that ANI is in the wrong in this instance. 100% without a doubt, ANI is in the wrong here. But will things get done about it? It all comes down to, I guess, Indian courts. That's probably what's going to happen. That's probably what will happen. I don't know. Hopefully his channel doesn't get deleted. It would be a travesty if his channel is deleted. It really will.